Morning everyone, this is Jyoti Gautam, your science teacher, and today we'll be starting with a new topic, that is sorting materials into groups. Now, dear students, before we move on to the complexity of this chapter, let us understand the word sorting. क्या मतलब होता है इस word का, sorting word का? Sorting basically means to categorize things or to classify things. When we categorize any object into groups, that means sorting materials. So, it's classification of materials, identification of material, and allotting them a group. So, sorting, classification, and categorization. These are the synonym words. They can be interchanged. Okay, so let's start the topic. Now, in this picture, you can see different types of objects are present. Moving on, the first one is the desk, then is the chair, your book, paper, pencil, clips, calculators, stapler, marker, pencil sharpener, the sellotape, the backpack, pencil case. There are n number of materials present in this picture. Now, if I ask you, or if I give you a task to classify these materials or to sort these materials, how will you be able to sort them? अगर आपको ये बोला जाए कि इनको आपको क्लासीफाई करना है, कैटेगराइज करना है, कैसे करेंगे आप कैटेगराइज? देयर मस्ट बी सम बेसिस, कोई प्री रिक्विजिट तो होगी ना, उसके बेसिस पे हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं. ऑफ कोर्स there are some qualities or the properties on the basis of which we categorize object or we sort object. In your laptop or phone, you must have seen a feature of sorting things. जब हम लैपटॉप पे काम करते हैं तो हमें एक फीचर दिखाई देता है, सॉर्ट का फीचर. उस सॉर्ट का सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है. सॉर्ट का सिंपल सा एक मतलब क्या है कि हम अपनी जितनी भी फाइल्स हैं उनको अरेंज कर रहे हैं. सॉर्टिंग का दूसरा मतलब एक और क्या हो गया कि अरेंजमेंट है उनका. कैसे अरेंज कर रहे हैं हम उसको अरेंज कर रहे हैं या तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिक ऑर्डर और ऑन अदर डिफरेंट बेसिस. साइज़ के बेसिस पे सॉर्ट कर रहे हैं हम उसको. हमने किस डेट को अपने डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड किया उसके बेसिस पे सॉर्ट कर रहे हैं. फाइल साइज़ के बेस पे सॉर्ट कर रहे हैं. सो different features are present. Similarly here also, if I ask you to sort these objects, you can sort objects like, just a second, yes, you can sort objects like you can keep pencil, ballpoints, colored pencils, pencil cases together because they all have a common thing, pencil, in them. Yes, in another classification, you can also keep the notebooks, book, pens, clip, compass, calculator, pencil sharpener, marker, eraser into this because they all are a part of a stationery. But you can never keep these things with these two things because chair and desk, they are not stationery, they are furnitures. Okay, got it? So we can classify these objects on the basis of their different properties. Chair and table, or your bed, your dining table, your sofa, these are in the category of furnitures. हम इनको किस कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं? हम इनको क्लासीफाई करते हैं फर्नीचर कैटेगरी में. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं आपसे बात करूं कि स्टेशनरी में क्या आएगा, तो स्टेशनरी में आपकी बुक्स, नोटबुक्स, रजिस्टर्स, पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर्स, ओके, कंपास, ज्योमेट्रीज, ये सब आपकी स्टेशनरी में आ जाएंगी. बट इफ़ आई ओनली आस्क यू पेन कैटेगरी में क्या आएगा, और पेन अगर आपको सॉर्ट करना है, अगर इस पिक्चर में आपके पास 10 डिफरेंट टाइप के पेन होते हैं और 2-3 और अलग चीज़ें होती हैं, एंड इफ़ आई आस्क यू टू सॉर्ट पेन, so you won't go for the brand name, you simply took out all the pens and just keep them aside. अगर आपसे पेन बोला जाएगा तो be it a gel pen, be it a ball pen, be it black, blue, orange, be it any color of pen, you can keep them aside because irrespective of their color, irrespective of their texture, irrespective of their shape, size, price, they all perform a same function. They all have the same common name, that is pen. Okay, likewise, if I talk about clothes,
So I can keep all my clothes which I used to wear, or which I wore in that category of clothes. अगर मैं बात करती हूँ तो वॉर्ड्रोब इज समथिंग जिसमें हम अपने सारे क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज पहनने से रिलेटेड चीज़ें रखते हैं. स्टेशनरी समथिंग जिसमें हम अपनी सारी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें रखते हैं. फर्नीचर इज अ कैटेगरी जहाँ पे हमारा वुड वर्क से रिलेटेड चीज़ें होती हैं. शू रैक की अगर मैं बात करूँ तो दैट शू रैक विल कंटेन ऑल द फुटवेयर्स, बीट सैंडल, बेली, बूट्स, एनीथिंग, शूज. Okay, so in this way we can categorize our things. Utensils की कैटेगरी में utensils आते हैं, जितने भी utensils हों. Okay, so I hope this concept of classification, sorting and categorization is clear to you. Now, before we move on to the different properties or the basis of material, there is one simple question which arose in my mind for you all. What is the need to classify object? What is the need to sort objects? ज़रूरत क्या है हमें चीज़ों को सॉर्ट करने की? What is the need that we took a pain to keep our stuffs separated? हम चीज़ों को अलग अलग क्यों रखते हैं? क्लोथ्स को वार्डरोब में, यूटेंसिल्स को किचन में, अपने स्टेशनरी को बुक शेल्फ में और ड्रॉर्स में, शू को शू रैक में, ओके, अपने पेन एंड पेंसिल्स को ज्योमेट्री बॉक्स में. वाई टू कीप our things so assembled and organized? What is the need to sort all these things? ज़रूरत क्या है? Yes, the main reason that we prefer sorting or we prefer classification of object is to keep that confusion less, keep the things assembled so that we can easily find out them whenever we are in need. जब भी हमें ज़रूरत हो तो हमें ईजी एक्सेस हो उन चीज़ों का. पहला रीज़न. दूसरा रीज़न, टू अवॉइड अनवांटेड मिक्सिंग ऑफ आर थिंग्स. हम अनवांटेड मिक्सिंग को अवॉइड करते हैं एंड दैट इज़ वाई वी कैटेगराइज आर थिंग्स. नाउ स्टूडेंट्स, जस्ट इमेजिन इफ आई आस्क्ड यू और इफ योर मदर आस्क्ड यू कि go and get that dress material, and if you have not sorted your clothes and your other stuffs, what will happen? You'll lead yourself to a mess and you'll keep on searching for that dress material for the whole day. क्या होगा अगर आपने अपनी चीज़ों को सॉर्ट नहीं किया हुआ? तो आप उसको ढूंढते रहेंगे. You will not get it easily. Okay, similarly, we always in our kitchen we always keep our spoons separated. हम अपनी spoons को अलग रखते हैं. But what will happen if you mix your spoons, knives and other utensils together? जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो it will took a lot of time to you to search that spoon and use that. So to avoid that confusion and to save time and to avoid unwanted mixing, we prefer sorting of things and we prefer their classification and categorization. Now, there are some properties of material on the basis of which we categorize material or we sort them. What are these properties? These are the different properties. 4 are mentioned in this slide only. The first one is the appearance. How does the material appear? Appear word का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ दिखती कैसी है? Yes. Appearance means how does the material look on an outer show. अगर आप बाहरी तरह से किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो हमें कैसी दिख रही है? That means the appearance. Some objects look so shiny, so bright. On the other hand, they look dull. So the material which generally look dull, they are non-lustrous. They don't have any shine in them. On the other hand, the material which have shine, have bright surface, they are lustrous material. They have luster in them. Okay, the second property is the hardness. Hardness simply means whether the object is compressible or not compressible. Whether when we apply any force on a material, it will press down or it will not press down. Okay, so we can also classify our materials on the basis of their hardness as well. Then comes another property, whether the material is soluble or insoluble. So another name for soluble is whether the material is miscible or non-miscible. Miscible and mixable, they sound same. Mix and miss, they sound same.
मतलब क्या होता है उसका मतलब होता है कि जो हमारा मटेरियल है वो डिसॉल्व हो सकता है नहीं हो सकता, वो मिक्स हो तो सकता है नहीं हो सकता. On the other hand, insoluble and immiscible means whether it won't get dissolved. वो easily dissolve नहीं हो सकता और easily mix नहीं हो सकता. Insoluble and immiscible. The next property is the transparency. The transparency again have three different types of objects: the transparent, the translucent, and the opaque. The transparency, what does that word transparency means? The transparency simply means whether the light can pass through that object or not, whether we can see in and out through that object or not. उस मटेरियल को अगर हम पकड़ रहे हैं तो क्या हम उसके आर पार देख सकते हैं? क्या लाइट उस मटेरियल से क्रॉस हो सकती है? तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द ट्रांसपेरेंसी and on the basis of this property we again can classify objects. So we have different properties of material on the basis of which we classify them or we sort them. Okay, these are just the four properties. We have other properties as well. Now, on the basis of appearance, we have two main broad categories of objects. The first is the lustrous and the non-lustrous. As I have mentioned previously, the lustrous means object which have shine or glossy surface, have a bright shiny outer appearance. On the other hand, the non-lustrous, they are dull. They don't have shine. Okay. If I talk about the lustrous objects, the best example is your gold, other silver material, gold, silver, platinum, and other objects. On the other hand, the non-lustrous have your coal, जो कोयला होता है, it is non-lustrous. Then is your wood. Wood is again non-lustrous. They won't have any shiny surface. Okay. Now moving on to the different examples. The iron, copper, aluminium, gold, platinum, silver, almost all metals, they have very shiny surface and they have brighter appearance and they are lustrous. On the other hand, your cardboard, your paper, wood, they don't have any luster, any shine. They are dull in appearance. You took any paper, be it A4 size paper, colored paper, ivory sheet, or any other type of paper, generally have a dull appearance. It won't have any won't have any luster or shine. On the other hand, अगर आप लकड़ी को देख रहे हैं, wood is again so dull, won't have any shiny surface on it. Yeah, we generally apply some polish. आप में से कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आया होगा कि मैम हमारे घर में जो wardrobes हैं, they're very shiny and it is made up of wood. Yes, because those wardrobes and those furnitures, they do have a shiny surface because we applied a coat or of a paint, apply a coat of paint on that wood surface. हमने उस wood पे क्या क्या हुआ है, एक ऊपर से artificial shiny coating की हुई है, जिससे उस wood की एक तो शेल लाइफ इंक्रीज हो जाती है, ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाती है, कोई पेस्ट इन्फेक्शन भी नहीं होता, एंड इट लुक ग्लॉसी एंड शाइनी. But in natural, the wood is non-lustrous. Okay. Now, next classification on the basis of hardness. Hardness also I have mentioned. Hardness means when the object is whether compressible or non-compressible, whether it gets pressed easily or it will not pressed easily. On the basis of hardness, we have two categories: the hard material and the soft material. As the name suggests, it's very easy. Hard materials are those materials which are have a harder surface. They do not get compressed whenever we apply any external force on them. They do not get pressed easily. Okay, they remain in their shape, size. Whenever we apply a force, जब भी हम force apply करते हैं किसी भी hard material पे, जो उसकी shape और size है वो change नहीं होती. On the other hand, the soft materials, they have an opposite quality. That means whenever we apply a force on soft material, they get compressed easily. They change their shape and size. उनकी shape और size में क्या होता है? Change हो जाता है. Hard material, for example, if I talk about hard material, diamond is very hard. You cannot
cannot compress a diamond. Okay, and other materials, wood is very hard. If you apply an external force, you cannot change its shape. Yes, you can cut wood, आप wood को काट सकते हो, लेकिन एक्सटर्नली फोर्स लगा के आप उसको नॉर्मली मशीन्स के थ्रू नहीं, नॉर्मली आप फोर्स लगा के उसके शेप को चेंज नहीं कर सकते. सो इट्स अ हार्ड मटेरियल. And soft material on the other hand, they can easily be melted, molded. अगर सॉफ्ट मटेरियल की अगर हम बात करते हैं सिंपल से, तो जो डो होता है, आटा, गूथा हुआ आटा, यू कैन ईजिली वेन एवर यू अप्लाई अ फोर्स यूजिंग योर हैंड और फिंगर, जब आप उसको पंक्च करते हो तो ईजिली क्या होता है, जो डो वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है. आप अगर उसको राउंड बनाना चाहते हो तो राउंड बन जाता है. अगर आप उसको रोल करके चपाती के फॉर्म में बनाना तो चपाती के फॉर्म में. दैट मीन्स इट्स अ सॉफ्ट मटेरियल. ओके, देन द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द solubility. Solubility is a concept which basically means the material soluble है या insoluble है. वो मिक्स हो सकता है दूसरे कंपाउंड के साथ या मिक्स नहीं हो सकता. Okay, if the material is soluble, it is known as mixable material or miscible. On the other hand, if the material is insoluble, it is known as immiscible material. Okay, some substances have a completely disappeared or dissolved in water. Such substances are called soluble substance. On the other hand, the substances which do not get dissolved in water are called insoluble or immiscible. वो सब्सटेंस जो पानी में या फिर किसी और सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते उनको बोलते हैं इनमिसिबल या इनसॉल्युबल. नाउ आई नो कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे बेस्ट एंड द ईजीएस्ट एग्जांपल ऑफ सॉल्युबल वो स्ट्राइक किया होगा. दैट मीन्स शुगर वाटर एंड सॉल्ट वाटर. ऑफ कोर्स शुगर एंड सॉल्ट, ये दोनों ही वाइट कलर के जो कंपाउंड्स और कंपोनेंट्स और मटीरियल्स हैं, ये कैसे हैं, दोनों के दोनों सॉल्युबल हैं. हम इनको ईजिली पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं, ईजिली इनको क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं. बट ऑन द अदर हैंड द सैंड जो मिट्टी होती है, जो रेत होती है, वी कैन नॉट डिसॉल्व दैट. दैट इज अ इममिसिबल और इनसॉल्युबल मटीरियल. चॉक पाउडर को अगर हम कर रहे हैं तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, वो पार्शियली डिसॉल्व होता है. पार्शियली मीन्स जो उसका बिल्कुल फाइन पार्टिकल है वो डिसॉल्व हो जाएगा और थोड़ा सा कोर्स है वो डिसॉल्व नहीं होगा. सो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम एक क्लासिफिकेशन और भी कर सकते हैं, कंप्लीटली सॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल. नाउ मूविंग ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी के बेस पे कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, ये क्लासिफिकेशन देखते हैं हम. ट्रांसपेरेंसी का अगेन मतलब क्या है, मतलब है कि वेदर द लाइट इज एबल टू गो थ्रू द मटेरियल और नॉट, वेदर वी आर एबल टू सी इन एंड आउट और थ्रू दैट मटेरियल और नॉट. Okay, so on the basis of transparency, we have three different types of material: the transparent, the opaque, and the translucent object. Now, as the name suggests, transparent means, this is a very common word. We almost, heard this word every second day. Transparent object means an object which is so clear, which is like so clear that the light can easily pass through that material and we can see in and out through that material. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके थ्रू लाइट इजीली पास ऑन हो जाती है और हम उसके आर पार देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल योर ग्लास, अगर हम कांच की बात कर रहे हैं तो कांच का जो ग्लास है हम उसके आर पार देख सकते हैं. ओके, इफ आई टॉक अबाउट द नॉर्मल ग्लास विंडो, कांच की जो खिड़की होती है ग्लास विंडो, हम ग्लास विंडो के आर पार देख सकते हैं. ओके, नॉर्मल योर पॉलीथीन, प्लेन वाइट पॉलीथीन, शाइनी वाइट पॉलीथीन, वो भी आपकी क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कलर्ड पॉलीथीन्स बिकॉज कलर्ड पॉलीथीन्स दे डोंट अलाउ कंप्लीट passage of light. Colored polythene is in the category of translucent, but the shiny white polythene, that is in the category of transparent because we can easily see through that material. Then the opaque materials are those materials which do not allow light to pass through them. They do not allow at all the light to pass through them. That means materials through which we cannot see in and out through. वो मटेरियल जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते.
सकते। फॉर एग्जाम्पल योर एनी मेटल, आप कोई भी मेटल की सरफेस ले लो, उसके आर पार आप नहीं देख सकते क्योंकि उसमें से लाइट पास ऑन नहीं हो सकती। योर वुड, ब्रिक्स, उसके आर पार भी हम नहीं देख सकते, ब्रिक्स के भी। सो दीज आर द ओपेक मटेरियल्स. Then is the translucent. Now translucent is a category in between the transparent and the opaque. Translucent वो category जो इनके बीच में. That means neither it is too opaque, neither it is too transparent. That means it allow partial, transfer of light from one position to another, in and out. That means it allow some light to, transfer from transfer through it. We can see, in and out the translucent material partially only. हमें सिर्फ धुंधला दिखता है, जो धुंधला वर्ड होता है वो दिखता है. Window, glass window is an example of transparent, but in winters that foggy glass window is an example of translucent. अगर हम normal glass window की बात कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है, ट्रांसपेरेंट. लेकिन जब विंटर्स के टाइम पे जो फॉग मिस्ट जम जाती है, उसके बाद जो हमें धुंधला धुंधला दिखता है, दैट एट दैट टाइम दैट ग्लास विंडो बिकम्स ट्रांसल्यूसेंट. द कलर्ड पॉलिथीन्स, दे आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट. ओके, योर बटर पेपर होता है विच वी यूज इन एक्सपेरिमेंट्स एंड इवन आर मेकिंग क्यूजीन्स. दैट बटर पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट. हमें उससे क्लियरली नहीं दिखता पूरा, हम उससे धुंधला धुंधला देख सकते हैं. वी कैन ट्रेस मटीरियल थिंग्स. So on the basis of transparency, we have three different types of material: the transparent, opaque and translucent. Here are some of the example and the definition. I'm reading it once again for you all. Transparent are those materials through which the things can be seen: glass, water, air and some plastics. Some plastic, that means again that white transparent polythene. Polythene is again a plastic. Opaque materials are some material through which we cannot able to see. These materials are called opaque. Example, your wood, your cardboard, your metal and of course some plastics. Now अब you'll be surprised कि मैम plastics transparent में भी है, plastic opaque में भी है. Yes, and कुछ plastics translucent में भी हैं. क्यों? Because we do have n number of variety of plastics. हमारे पास plastic की भी बहुत varieties हैं. Some plastics allow light to pass through them, they are transparent. Some totally block light, they are opaque, and some allow partial passage of light, they are translucent. So oil patch on paper, that means again the butter paper is an example of translucent, which allow a little bit of light to pass through them but do not allow materials to clearly see in and out through them. Now here is a very nice picture for you all. It's Bujo. He's holding a piece of paper. He's holding a translucent material and he's holding a transparent material. He's holding three different materials. The first one is totally opaque. It won't allow the face of Bujo to be recognized. इस पेपर को जब बूजो ने पकड़ा हुआ था, हम उसके we cannot see in and out through them. हमें बूजो की face नहीं दिख रहा. And in this picture, the Bujo face is partially visible, but we cannot easily find out whether it is Bujo or some other person. And in the last picture, the favorite Bujo is clearly visible because the material he is holding is a transparent material. This is a transparent material. This is a translucent material and this one is a opaque material. So I hope the concept of transparent, translucent and opaque material is clear to you. Now a very small homework for you all. You need to classify objects in your surrounding in different categories. You need to surround your different objects in different categories on the basis of whether they are hard or soft, whether they are transparent, opaque, whether they are soluble or insoluble. So you can classify objects present in your home only. आप अपने आसपास सराउंडिंग में ऑब्जर्व करो और चीज़ों को क्लासीफाई करो.
लेट मी गिव यू सिंपल एग्जाम्पल, एक छोटी सी आपको हिंट देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, यू यूज़ योर वाटर बॉटल. ओके, आपके पास आपकी वाटर बॉटल है एंड आपके पास आपका इरेजर है. ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल. सो या फिर पेंसिल है, पेंसिल इज हार्ड, इरेजर इज सॉफ्ट. Okay, similarly you have n number, you can write down crazy examples, you can have n number of different example. You can seek help from your parents as well. You can involve your parents in this activity just to make this concept more clear. Now here are some value based questions for you all. Just a second. Yeah, now there are 10 value based questions for you all. The first one is, the metals they have luster. Yes, the metals they do have luster. Then you need to write down the two examples of object made up of metals. The first one is lock or steel glass, or you can write any other example. The doorbell is also made up of metal. Your water bottle, the Milton water bottles, they are made up of metals. Your almirah, it is again made up of metal. Then wood and copper, they both show luster. Is it true or false? Just think. Copper shows luster, but wood won't show luster. कॉपर है, इट इज़ अ मेटल, उसकी सरफेस कैसी होती है? शाइनी होती है, ग्लॉसी होती है. बट इफ़ आई टॉक अबाउट वुड इज़ नॉन लस्चरस. वुड की सरफेस कैसी है? डल है. देन राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल. येस, वी हैव सीन 4 to 5 properties on the basis of which we classify material. You can write any property. Here it is mentioned, the hardness and their solubility, whether they are soluble or insoluble. You can also mention their appearance and their transparency. Now, what are soft materials? Yes, soft materials are those materials which can be compressed or scratched easily, or they change their shape and size when a force is applied on them. Then you need to give example of two soft material, the cotton and sponge. कॉटन जो रुई होती है, इट्स वेरी सॉफ्ट, आप उसको प्रेस कर सकते हो. स्पॉन्ज होता है, उसको भी आप इजीली प्रेस कर सकते हो. स्प्रिंग होती है, इरेजर्स होती हैं, रबर होते हैं, उनको भी हम प्रेस कर सकते हैं. देन हार्ड मटेरियल, आयरन, वुड, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ऑल द मेटल्स दे आर हार्ड मटेरियल. Now here is a fill in the blanks for you all. Materials can have different properties such as, again this question is the same as that of the question number 4. Materials की कौन कौन सी properties होती हैं, यहाँ पे आप उसमें add कर सकते हो. that जो materials होते हैं, they can be lustrous, non-lustrous, they can be hard, they can be soft, they can be soluble, insoluble. Okay, then a piece of stone is a dash material, and in the bracket you have given two options, hard and soft. This is a very pretty simple question. You can easily pick out the right answer, that yes, a stone is definitely a hard one. Beat any stone, it will be a hard one only. It's a hard material. Then the last question is, what type of substance are said to be soluble in water? किस तरह के सब्सटेंस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? द सब्सटेंस दैट कंप्लीटली डिसअपीयर और डिसॉल्व इन वाटर आर नोन एज सॉल्युबल और मिसिबल सब्सटेंस. वो सब्सटेंस जो मिक्स हो जाते हैं वाटर में और डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मिसिबल और सॉल्युबल सब्सटेंसेस. सो दिस मच ऑल. थैंक यू सो मच. I hope this concept is clear to everyone. If you come across any query, you can pose your question anytime. Thank you.